The Arvind Kejriwal government has announced this year's winter action plan. Many important announcements there. First, of course, is the fact that 13 pollution hotspots have been identified. And this also, as he says, that many teams have been formed to monitor not only vehicular pollution but also industrial pollution. Now, earlier in the winter action plans of the last couple of years, vehicular pollution has not found space. But this year, Arvind Kejriwal has said that the PUC certificate, the pollution certificate, is mandatory for vehicles, and there will be a constant vigil as far as vehicular pollution is concerned. This also, as several teams have been formed to monitor construction activity in the national capital. In fact, a graded action plan will also be implemented soon. In fact, Arvind Kejriwal also said that stubble burning has gone down. In fact, it indeed went down last year by 30%. A lot of climate change factors were also responsible for that. But this year, Arvind Kejriwal has said that the biodecomposer technology will be continued and it will be given to farmers for free. Listen to what Arvind Kejriwal had to say. हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम है। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है, उसके लिए 82 रोड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं। 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। My colleague Sharad Sharma is live with us. शरद, तो कई ज़रूरी चीज़ें बोली हैं अरविंद केजरीवाल ने। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो उन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है वो काफ़ी काम करी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी भगवंत मान की लास्ट ईयर जब उन्होंने कहा था कि चावल के अब क्रॉप डाइवर्सिफाई करी जाए। तो इस बार विंटर एक्शन प्लान में नई क्या चीज़ है, क्योंकि ये स्मॉग गन्स वगैरह की बात पहले भी हुई है और कई लोग एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इनइफेक्टिव है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये विंटर एक्शन प्लान हर साल आता है, क्योंकि जब विंटर्स आती हैं दिल्ली में तो हवा में जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, विंड स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण, आप कुछ भी कर लीजिए, प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ख़राब हो ही जाती है। और उसमें जो ज़्यादा समस्या और ज़्यादा पैदा होती है वो होती है पराली से। जो पराली जलती है उसकी वजह से प्रदूषण एक खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। इतना हो जाता है कि लोग खांसते हुए नजर आते हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हर साल सवाल यही होता है कि पहले से बेहतर किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि लगभग यही तरीके होते हैं कि आप वाटर स्प्रिंकलिंग कीजिए, आप एंटी स्मॉग गन लगाइए, जो हॉटस्पॉट हैं या कहीं जाम लग रहा है तो वहाँ आप जो है इंतज़ाम कीजिए, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑड इवन वगैरह ये सब हम देखते हैं। लेकिन बड़ा ही सवाल यही था अरविंद केजरीवाल से इस बार और पिछले साल भी, वो ये कि जब पंजाब में सरकार नहीं थी तब पंजाब पे आरोप लगाया करते थे कि पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही है और किसान जो हैं वहाँ पर मजबूरन पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जो 30% का आज की जो बात बताई है संसद में, ये असल में सरकार ने जवाब दिया है। उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि पिछले साल 30% पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, 30% जो हैं वो उससे पिछले साल के मुकाबले में वो कम दिखाई दी हैं। तो ये एक अच्छा संकेत पिछली बार देखा गया, लेकिन इस साल कैसा सिनेरियो होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि कल से ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं कि पंजाब में पराली जलनी शुरू हो गई है। तो इससे ये तो है कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रही है ये घटनाएं, पराली जलने की घटनाएं ज़ीरो नहीं होती दिखाई दे रही। इससे ये है कि प्रदूषण तो होगा, लेकिन ये कितनी कम की जा सकती हैं, जितनी ये कम होगी उतना ही जो रिलीफ है वो दिल्ली को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का अपना पोल्यूशन जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन समस्या जो बढ़ती है वो पराली के पोल्यूशन से बढ़ती है। और अगर पंजाब का, हरियाणा का, जो नेबरिंग स्टेट का जो पराली का पोल्यूशन है वो अगर दिल्ली में कम होता है तो अपनी स्थिति जो है दिल्ली की वो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, ख़राब होगी लेकिन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो नज़रें इस बार इसी बात पर लगी हैं कि कैसे जो विंटर एक्शन प्लान है ये लागू सरकार करेगी, अच्छी तरह से करेगी, और पराली जो है वो कितनी कम जलती है उसी के आधार पर निर्भर करेगा कि हमारी सांसें दिल्ली के अंदर किस तरह से चलती हैं।
बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए. So, Sharad is reporting, the impact of the winter action plan remains to be seen, because as Arvind Kejriwal has also said today that 30%, there has been a 30% decrease as far as stubble burning is concerned, particularly now because Arvind Kejriwal has an AAP government both in Punjab and Delhi, so the onus completely lies on him. But let's take a look at what really were the key highlights of the winter action plan as announced by Arvind Kejriwal. So, it's a 15 action plan to combat air pollution in the national capital. Every year, Arvind Kejriwal rolls out this winter action plan at the onset of the pollution season in the national capital. Now, one important takeaway is that 13 worst pollution hotspots have been identified in the national capital. Which are these hotspots? Well, it includes the Anand Vihar area, which is of course the worst impacted when it comes to pollution because of construction activity and also because of heavy traffic there. Now, the free biodecomposer technology for stubble burning, which was announced by Arvind Kejriwal last year, in fact, that this is a biodecomposer that has been developed in collaboration with several universities. This will be given to farmers, and this essentially has to be sprayed on stubble so that the stubble does not have to be burnt. Now, this decomposer technology is also a contentious one. Many experts say this has been ineffective. Now, over 800 water sprinklers to curb dust pollution have also been deployed. These water sprinklers are, of course, the responsibility of the MCD, and we see them on the roads of the national capital almost every day. This was rolled out by Arvind Kejriwal several years ago. Now, the POC certificate, or the mandatory pollution certificate for vehicles, has also been announced by Arvind Kejriwal. Vehicular pollution, of course, contributes to almost 70% of the pollution in the national capital, which is why it's extremely important that these POC certificates are made mandatory. Now, a green war room will also be set up to monitor pollution levels. Again, it has become a practice that has, since last year, that this war room was set up by Environment Minister Gopal Rai, and this will continue. Now, complete ban on firecrackers in the national capital is also something that Arvind Kejriwal reiterated, though last year it was seen that it was largely ineffective because there were shops where firecrackers were still being sold, in several parts of Delhi. So, it's again a contentious announcement there. Over 60 teams have been formed to curb industrial pollution as well. Industrial pollution accounts for more than 20% of the pollution in the national capital. This includes construction activity. So, now that graded response action plan, or the GRAP, that will also kick in once PM 2.5 levels actually begin to worsen. Currently, as we speak, I was just checking on my phone, and the PM 2.5 levels are 60x the safe levels, the safe limit set by the World Health Organization. So, pollution season is truly beginning to kick in as far as the national capital is concerned. Remains to be seen how the winter action plan actually works out.